हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए फॉर द ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है अंडर द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये एग्जाम 31 अगस्त को कंडक्ट कराया गया है 2025 में। ठीक है, एंड दिस इज द पेपर वन है जो कि आपका ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस्ड अबव द फ्लोर द मेन बार ऑफ द कॉलम, सो मेन बार ऑफ द कॉलम should continue up, bend inward at the floor level, stop just below the floor level and separate lap bars provided। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अ स्टोन सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ slates. Option A is a correct answer. For constructing road pavement, the type of cement generally used is, so the cement generally यूज की जाती है वो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मेटल्स रिक्वायर्ड फॉर 3.7 मीटर वाइड मैकेडम रोड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ फॉर 1 लेयर ऑफ 88 सेंटीमीटर कॉम्पैक्शन थिकनेस। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और मेटल, जो मेटल की जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आएगी अराउंड 444 cubic meter. That is option A is the correct answer. If the intercept on vertical staff is observed as a 1.5 meter from the tachyometer, the horizontal distance between the tachyometer and the staff station, this is 150 meters. Groundwater is generally free from, so groundwater is generally free from the suspended impurities. Option A is the correct answer आपको यहाँ पर मिलेगा। Now coming to the question number 4. Workability of concrete is directly proportional to, so this is directly proportional to the water cement ratio and grade of aggregate। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कोर्स ऑफ सैंड हैज अ फाइनेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, सो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2.9 to 3.2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, black cotton soil is not suitable for foundation because it swells and shrinks। option C is the correct answer आपको यहाँ पर मिलेगा। high percentage of C3S and a low percentage of C2S in a cement will result in, so इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होता है रैपिड हार्डनिंग होगी एक तो, दूसरा होगा हाई अर्ली स्ट्रेंथ विद हाई हीट जनरेशन के साथ में, मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये नहीं होगा। 1 and 2 रहेगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। फॉर 1 cubic मीटर ऑफ अ कॉन्क्रीट 1:4 के रेशियो में द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इज, सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 6.3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ बार्स टू बी स्प्लाइस्ड एट अ सेक्शन शुड नॉट एक्सीड, सो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना, 50%। प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ टू द वीक एंड डैमेज बिल्डिंग इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज द रेट्रोफिटिंग, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर द बीम ऑफ 2 मीटर स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 mm to 200 mm। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा आपका दैट इज 2 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले, इट मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द साइज ऑफ ब्लास्ट यूज्ड इन इंडियन रेलवेज फॉर वुडन स्लीपर इज, सो इसका जो साइज होता है बेसिकली ये जनरली यूज किया जाता है 50 mm का। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक ऑफ 30 मीटर चेन इज, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ वन लिंक, सो वन लिंक की लेंथ जो है वो होती है अराउंड 20 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी, तो इनमें से एक्टिविटी कौन सी है,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ये एक एक्टिविटी रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ ये भी एक्टिविटी रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ये भी रहेगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चैम्बर that should be provided in case of WBM water bound macadam pavement surface in an area of heavy rainfall? So यहाँ पर आपको कैम्बर का रेशियो देना है, तो ये होगा अराउंड 1:30 का। If P is the standard consistency of the given cement sample, then the quantity of water to be added to the to prepare a cement paste for the determining the initial setting time. So ये आपकी वैल्यू जो रहेगी, so this will be the 0.85% of weight of the cement. That is option B रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। मिनिमम थिकनेस ऑफ अ वॉल वेयर अ सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड इज। सो थिकनेस जो है वो है 1.5 ब्रिक रहेगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम द सेप्टिक टैंक इज रिमूव आफ्टर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सो मैक्सिमम पीरियड आपका 3 रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। द डीपीसी प्रोवाइडेड फॉर एफिशिएंसी एट, सो दिस विल बी द जस्ट लो बिलो द ग्राउंड लेवल। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोर्टार joint after completion of masonry wall is called as, so this is called as a pointing. Option B is the correct answer. The metric scale recommended by the BIS for the use of technical drawing in case of full scale, so this ratio will be the 1:1. Option A is the correct answer. The length of transition curve is proportional to, so this is proportional to the V की power 3 or upon R. Option C is the correct answer. Level crossing is an warning sign. Option B is the correct answer. Question number 28. Now coming to the question number 29. A 10% flood frequency, इसका मतलब क्या होता है? It means the flood has 10 out of 100 chances of being equal or exceed. That is option C बनेगा question number 27 का correct answer. Now coming to question number 30. When a slab is continuous over a several span, negative bending moment is induced over the, so this is induced over the intermediate supports पे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग द सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोआगुलेंट वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ferric chloride. Option B is the correct answer. The percentage of reinforcement in the case of slab when high strength defamed bar are used is not less than, so this is not less than the 0.12. As per IS 383, sand can be graded into the how many zones? So the zones are the basically called as 4 zones. Option D is the correct answer. If the longitudinal strain is tensile, the lateral strain will be, so lateral strain क्या होगा? It will be the compressive. Option B is the correct answer. Question number 36. Now coming to the question number 33. The water stored in a reservoir below the minimum pool level is called as, so this is called as the dead storage. The minimum and maximum percentage of longitudinal reinforcement in a column according to the IS 456-2000 are respectively. So ये जो वैल्यूज होंगी वो होगी 0.8% एंड 6%. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 37 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. The variation of the bending moment in the proportion of or in the portion of the beam carrying linearly varying load is called as, so 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्यूबिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम इज, so this is called as the right angled triangle. Option C is the correct answer. Effective length of a column is the length between the point of zero movement. Option C is the correct answer. Slice are provided in a dam to dam में provide की जाती है to supply the downstream area, reduce flood level or reduce or remove sediment from the reservoir.
दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। बेस बेस फ्लो जो है, बेस फ्लो इज अ delayed groundwater flowing reaching the downstream. Chemical weathering of a soil is caused due to the, so this is due to the oxidation, hydration, carbonation and bleaching. That is option D is the correct answer, question number 44. Now coming to the question number 41, the standard project flood is a, ये क्या होता है? This is a basically a larger than the maximum probable flood by the factor implying safety factors. That is option D बनेगा correct answer. Minimum width of septic tank is taken as, तो ये minimum width जो है वो ली जाती है 75 सेंटीमीटर की, ठीक है, minimum width जो है। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 76. So the method of shoring adopted in the losing soil when depth is not excess of 4 meter is called as, so this is called as the box sheeting. That is option B is the correct answer. Lee-Chatelier method can be used to determine the, so it is used to determine the soundness of the cement. The ratio of flexural rigidity of a beam B into D to another B into 2D of a similar material will be, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पर? तो रेशियो will be 1/8. Question number 50. BOD test is conducted at the temperature of 20 degree Celsius. Option C बनेगा correct answer. If the pores of a soil are completely full of air only, the soil is said to be, so the soil is said to be the dry soil. Forebearing of the line AB and BC are 40 degree and 120 degree. The included angle between AB and BC will be, so जो एंगल है वो होगा आपका 100 डिग्री का, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सिग्रेशन इन कॉन्क्रीट, ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी मोर देन, सो ड्रॉपिंग हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. वर्केबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट इज गुड इफ द aggregate is, so if the aggregate is called as a rounded aggregate. Option C बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 में करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54. Moment of inertia of a circular section about its diameter d is called as, so 54 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर pi d के पावर 4 upon 64. Mercury is used in barometer because, so it is used because of the it gives less height of column for high pressure, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. Such tank is provided in the hydropower scheme is to because to reduce the water hammering pressure, ठीक है, वाटर हैमरिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सर्च टैंक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज ड्राइंग ऑन द इज ड्रॉन बाय अज्यूमिंग द स्ट्रक्चर टू बी कट एट, सो इस स्ट्रक्चर को कट किया जाता है किस पॉइंट से? विंडो सिल लेवल से, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डैड या डेप्थ एरिया ड्यूरेशन स्टडी for the particular storm indicates that the average depth of rainfall ये कितनी होगी? So this will be the decrease as the area increases. The river which build up its bed progressively is called as, so this is called as a grading rivers. That is option A यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57. सेल्फ रिकॉर्ड रेन गॉज ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड जो है वो होगा मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल्स टू द ग्रेन. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. For the design of super elevation of for the mixed traffic condition, the speed is reduced by the 25%. Intersection method of the detailed plotting is mostly suitable for, so mostly suitable for the hilly areas. When the magnetic bearing of the sun at noon is 185 degree 25 minutes, the magnetic declination कितना होगा? सो ये होगा आपका 2 डिग्री 25 मिनट वेस्ट में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप
in a tube well is called as. So 66 का correct answer होगा reflex wall. Option B is the correct answer. An advantage of COD test over the BOD test is, so this is called as it is a relatively a quicker process. Lead acetate test in a sewer manhole is done to test the presence of. So ये presence किसकी चेक करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65. Wind blown silt having little or no stratification is called as. So this is called as the loesis. That is option D is the correct answer. A milestone chart is a shows that the event in chronological but not in a logical sequence. Option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. Which is not a method of controlled flood in irrigation methods. 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल. Which of the following structure is constructed to separate under the slice from the main weir? So this will be the divide wall. A wooden block hinged on the post outside a door is known as, so this is known as the stop. Option B is the correct answer. The first angle and third angle projection method are used for drawing the orographical projection. A joint between the component lying approximately in the same plane is called as, so this is called as the butt joint. The neutral axis of an over-reinforced section falls under the it falls below the critical neutral axis of the balance section. That is option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. Which of the following lies are used to show that an object is cut and then viewed? 73 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका hatching line basically. Option D is the correct answer. A floating body is said to be in a state of equilibrium, stable equilibrium basically, when the meta center is above the center of gravity. Option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following combination for the channel is most suitable to achieve the best result in the flood management? So 78 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा increasing width and decreasing roughness. Option B is the correct answer. Bar chart are suitable for, so bar chart are suitable for the minor works. A fluorescent test is conducted for the burnt clay to find out the presence of alkaline substances. Which of the following option is not a notable change while scheduling a project? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो रहेगा independent activities. Option B is the correct answer. As per IRC, the slope of earth is cutting should be, ये होगी आपकी 1:1 की. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following represents a metamorphic rocks? सो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा. देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स एक तो स्लेट होता है, दूसरा होता है क्वार्टजाइट. सेल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. सीपीआर टेस्ट इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का टेस्ट है ये सीपीआर टेस्ट? दिस इज रिलेटेड विद द पेनिट्रेशन टेस्ट. ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 में. क्वेश्चन नंबर 85. फ्लैश पॉइंट टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर द bituminous material. Option C is the correct answer. The maximum spacing of expansion joints in a plain concrete pavement of 100 mm thick is called as. So 86 का यहाँ पर correct answer होगा 27 meters. Which of the following is not a type of rigid pavement failure? So this is called as a ruts. Option D is the correct answer. Dump truck are the these are basically a self-propelled hauling equipment. Option A is the correct answer. Traffic rotary is suited for, so this is suited for the intersection. The minimum desirable radius of curvature or curve for the national highway in the mountainous terrain not snow bounded is called as. So ये आपका minimum desirable
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 50 मीटर का। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, sheep foot roller is used for the compaction of clay soil. Pick up the constituent of a good brick earth whose excess causes the raw material or raw brick shrink and ramp during the drying and the burning from the following. ये किस में से रहेगा? So यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा एल्युमिनियम, एल्यूमिना, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इज नोन एज द। सो 93 का करेक्ट आंसर होगा टोटल फ्लोट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मैथड यूज्ड इन सिटीज इज टू कलेक्ट एंड डंप वेस्ट इज कॉल्ड, दिस इज known as the landfills. Option A is the correct answer. High turbidity of water can be determined by the, so this is determined by the Jackson turbidity meter. That is option B is the correct answer. The distance between the center of adjacent river in a same row is called as the, so this is called as a pitch. The main function of the spillway is to, so इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, टू डिस्चार्ज द फ्लड वाटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड थ्रू द पाइप्स। ऑप्शन सी बनेगा 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं लास्ट के दो क्वेश्चंस की। द मिनिमम साइज ऑफ द ग्रीन इन सिल्ट इज अबाउट, ये कितना होता है मिनिमम साइज, ये अराउंड मिलेगा 0.0002 mm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following correct sequence for the temporary adjustment of the theodolite? So ये आएगा आपका setting, centering, leveling, elimination of parallax. That is option C बनेगा correct answer. So this paper is of Assam Public Service Commission, और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए ये एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का, ठीक है। एंड दिस इज द पेपर वन है आपका ये, एंड एग्जाम कंडक्ट हुआ है 31 अगस्त 2025 में, ठीक है। एंड इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।